आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले. Why do you think so many people dislike you? Some even hate you. And how do you regain their trust and support? Well, आज की क्लास में हम जिनकी बात करना चाहते हैं in the realm of YouTube. Following is my conversation with my new friend, Mr. Goose. The guy's name is Lex Friedman. Let's talk about Lex Friedman. Like, how much do you know about him? मैं कहाँ से चालू करूँ? जितना I know about him, I know because of you. And I think because of the episode he's done with Joe Rogan, which you were the one to send across. when I'm at my best, I'm dancing. Yeah, ultimately the skill conversation is just really listening. Mm-hmm. Like really, and listening and thinking. I really liked his episode with Grimes. And I'm currently watching his episode with Susan Cain. Great. So let me tell you about my journey of Lex Friedman. I discovered Lex Friedman because Peter Gould recommended it on the podcast. Nice. So मेरे को नहीं पता था who he was. Peter Gould ने बताया जब वो शूट वगैरह पे जाते थे बेटर कॉल सॉल शूट करने तो वो गाड़ी में सुनता था Lex Friedman को. There's an artificial intelligence podcast that's hosted by an academic named Lex Friedman, the Lex Friedman podcast. That's also sometimes very, very interesting. He interviews a lot of people with some fascinating ideas, including Elon Musk. So he recommended me that. उन्होंने बताया इस पे artificial intelligence के ऊपर एक podcast है and I really like listening to it. तो मेरे को बड़ा interesting लगा. AGI is still seen as the outcast. I don't know if it's an accepted term yet. So Lex is someone who understands how science works. मतलब आप Elon Musk देखो जो रोगन पे भी आया है और वो Lex Friedman पे भी आया है. वो जो रोगन पे भी 2 बार आया है, Lex Friedman पे भी वो 2 बार आया है. But जो रोगन पे जब वो आता है तो बेसिकली इट इज फॉर बिगिनर्स और वो बातें भी ऐसी होती हैं. बड़ा चिल होता है, नॉर्मल क्या चल रहा है लाइफ में और इस टाइप की, और फिर वो बड़े आइडियाज की बात करते हैं. Like, what's more important, Mars or a house? I like Mars. Okay. Is that really how you think? Like that it'd be better off planning on a trip to Mars or getting people to Mars? Yeah, definitely. Lex चालू ही 100 से करता है. I can tell immediately if a car is on Tesla autopilot because it's got just little nuances of movement. It just moves in a slightly different way. Sometimes it's very intimidating also to listen to them. Like, ये क्या मेरी समझ में आएगा? And the best part is जब आपको समझ में आएगा तो आपको पे ऑफ बहुत मिलेगा. मेरे को भी Lex के कुछ पॉडकास्ट में इनपॉइंट नहीं मिल पाता तो मैं बंद कर देता हूँ. It's not like I've listened to every podcast of his. So if I struggle, I switch to the next one. So I'll tell you some of the episodes that I have watched, but again, I'm trying to give an understanding of how this guy is. He is someone who understands science. So he starts from very top, and you'll still be hooked. And that is where Lex Friedman is a very good podcaster. वो अब बहुत deep dive में जा चुका है किसी चीज़ की और वो आपको hooked रखेगा. And Lex does this thing. No. Okay. So for our viewers, can you do this? For the people who do not understand the meaning of this word. It's relatively clear that your cantilever is at some point going to break down into this anthropic abyss and you have to pay the bill. Okay, Russia's my first language and I'm also an idiot. Me too. This is just 2 apes instead of playing with the banana trying to have fun by talking. Okay, anthropic what? And what's anthropic? Can you tell us what it means? And it is something I think you and I should also do. तो वो बहुत डम डाउन करता है, बट वो डम होके भी 80 पे ही रहेगा. मैं मेरे एक फ्रेंड को यहाँ पे शाउट आउट देना चाहूँगा, ऋत्विक पारिक है उनका नाम. So he is also a filmmaker. उन्होंने अभी एक फिल्म बनाई थी जो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल भी गई थी. So Ritwik told me there is a podcast that he has with this guy called Joshua Back. Oh. ठीक है. So मेरे को नहीं पता Joshua Back कौन है और मैंने सुनना चालू किया. The purpose of life in the sense is to produce complexity. And the complexity allows you to harvest entropy gradients that you couldn't harvest without the complexity. And in this sense, intelligence and life are very strongly connected. There's a comment on that video YouTube पे कि if aliens come to invade Earth, Joshua Back should be the guy who should be representing Earth to the aliens. आपने वीडियो देखा है Joshua Back वाले का? नहीं. So I'll tell you how he looks and how it is. तो इसका एक पॉइंट है कि जैसे ये हमारी सिविलाइजेशन खत्म कैसे होगी. Speaks very fast. है ना? ये बहुत मतलब ये तो वानी देखो, प्रोसेस करो, आगे बढ़ो. I remember where I was when I was listening to this podcast. I had just started
exercising, and there was a cycle in the park, and I was running and I was listening to the podcast, and I was like, and I slowed down, I started walking, and I still couldn't process it. So I sat down on the bicycle and I'm like, and then a part came in and I was like, wait, what? Kya bola? And then I felt dumb the entire day. One like suggestion I can give every person when they are listening to Lex Friedman, make notes. Don't make like long notes. Keywords लिख लो कि इस चीज की वर्ड बात हुई है, कोई वर्ड बोल दिया. ग्राइम्स जैसे वर्ड्स जो यूज करती थी ना, मेरे को बड़े पसंद आते थे. I'll give you an end point. Okay, like if you want to start with Lex Friedman, which podcast would be the one that I would recommend? आंखें बंद करके Lex Friedman का एक podcast है ग्राइम्स के साथ. We think engineering is so much more important than motherhood, but it's like, if you lose the motherhood, the engineering means nothing. We have no more humans. Can I just like nerd out or geek out about like the Grimes episode? Yeah. She is a great musician and बहुत different kind of musician है. और आप उनको देखोगे तो ऐसा लगता है ना, this is how mind works की ये तो ऐसी बातें करती होगी. Because आप put people into buckets without knowing कि ये किस लेवल पे बात कर सकते हैं. And then it suddenly makes sense कि यार ये और Elon Musk तो कितनी बातें करते होंगे यार. Right? No wonder they made a baby. हाँ, no wonder they made a baby कि they have so much to talk about. They would have so much to talk about. Grimes can be a good end point for people क्योंकि वो music है और धीरे धीरे ना वो geek out करते हैं चीज़ों के बारे में. A lovely episode. Then I want to like recommend another episode, Vani. ये तो बेसिकली आपका फर्स्ट एपिसोड हो सकता है अगर आपको साइंस, क्योंकि इसमें साइंस की कोई बात ही नहीं है. दिस इज एन एपिसोड व्हिच आई वॉच्ड 4 days back. It's with a comedian called Bobby Lee. Your dad died in August of 2019. Yeah. You did your research. Yeah, it's on your Wikipedia. No, I don't. Yeah. Bobby Lee basically is Asian and ना तो Bobby Lee जब like एक कुछ बात बता रहे होते हैं and he's like, so I dated a white girl once and I've also dated Asian girls, and like Lex Friedman says, are you about to be racist? And Bobby Lee says, yeah, a little. And he's like, okay, go on. One time I dated a white girl. Are you about to be a racist? A little bit. Okay. Yeah. और लेक्स की हाँ लेक्स की आप ऐसी साइड ही कभी नहीं देखी होगी. एंड एज क्रिएटर्स द थिंग टू लर्न इज हाउ टू स्विच योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग डिपेंडिंग ऑन द गेस्ट. इस पे हम भी कितनी काम करते हैं, राइट? कि अगर इस जोन का है तो हम इस तरीके से कन्वर्सेशन आगे लेके जाएंगे. बॉबी ली के साथ वो इतना चिल है ना. एंड देन देयर इज अ एपिसोड विद सूजन केन. If you really believe that you have no choice, then it's adaptive to tell that story, that death gives meaning to life. Dude, Susan Cain, the way she talks. Can I ask you something, Lex? Do you always wear a suit? And she's like, और ना ऐसे मतलब पूरा बात समझ रही है. एंड लाइक शी ऑलवेज हैड अ क्वेश्चन, ऑलवेज. लाइक उसको पता है वो गेस्ट है, 3 घंटे निकाल के आई है, पर वो उससे कुछ इंटरेस्टिंग बात कर रही है. इंट्रोवर्जन के बारे में जैसे बात कर रही है कि हाउ इट इज़ अ सुपर पावर, बिकॉज यू हैव ऑल्सो रिकमेंडेड अ बुक लाइक क्वाइट. तो बहुत अच्छा एपिसोड है सूजन केन वाला. मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ कि जो रोगन के सेट पे गया था लेक्स फ्रीडमैन, एंड लेक्स एंड जो रोगन वर टॉकिंग, और लाइक इन द मिडल ऑफ द एपिसोड वो कुछ वॉच का डिस्कशन होता है. तो जो अपनी वॉच लेक्स को दिखा देता है, जो रोगन बोलता है यू कैन कीप इट, एंड लेक्स इज लाइक सीरियसली, एंड इज लाइक या, एंड लाइक ही बिकेम लाइक अ किड, और बिकॉज ही रियली एडमायर्स हिम, तो वो अपनी वॉच उसको गिफ्ट कर देता है. एंड यू सी दी लाइक द camaraderie these people have. Take this. That's yours now. That's an Omega. And that has a moon phase. See that moon in the bottom of it? That's yours. That's yours. You see the moon on the bottom of it? Do you see that? This is a happy man right now. That's my watch. That's my favorite watch, by the way. तो उन्होंने उसी सेटअप में एक और एपिसोड रिकॉर्ड किया था जहाँ पे दे जस्ट लाइक स्विच द पोजीशंस, एंड वो लेक्स के चैनल पे गया था. देयर दे टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फक यू मनी, एंड दे लेक्स हैड दिस क्वेश्चन, सो आई हैव फक यू मनी, you have fuck you money, what next? What do you do after you have fuck you money? I have also talked about this concept with Tanmay, but कि once you become post-economic, आप life में क्या करोगे? If I was post-economic, what would I do? This is a question I keep asking myself. If you're post-economic, what would you do? I think I would still make content. Right, कि आपने सब अचीव कर लिया कि जो करना था, ये जीतना था, इतना पैसा कमाना था, अब क्या करोगे? Very interesting discussion they have.
So अभी like जो रोगन वापस आए उनके podcast पे, but this is the first time वो जो रोगन के setup में आए. I haven't seen this episode, but I've seen the previous like जो रोगन episode. जो रोगन के बारे में हम कभी अलग से बात करेंगे, the rights and the wrongs about it, but like this is great. And वो एडमायर करता है लोगों को, लाइक कि इफ समवन इज गुड, लाइक वो जैसे जो रोगन के बारे में कभी नहीं झिझकता. ही डज दैट एंड हिज ट्वीट्स आर अमेजिंग. सो गुड टू बी अलाइव एट अ टाइम वेयर लेक्स फ्रीडमैन इज अलाइव. या एंड थंबनेल्स आर अमेजिंग. मेरे को थंबनेल का बहुत सिलेक्शन पसंद है. वो एक फोटो होती है, वो बहुत अच्छा से ऐसे स्पॉटलाइट इफेक्ट होता है उस पे एंड पीछे ब्लैक बैकग्राउंड होता है एंड टाइटल होता है. सो आपको मतलब हर चीज पता है कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू. So yeah, man, I'm so glad like you let me nerd out on Lex Friedman. Do you think you will give him a chance like the podcast episodes? Definitely. Nice. There's no doubt. You start with Bobby Leewani. Like I am sure like you are going to message me after it. This is it. Like there is much more to talk about him, but we can always do a part 2 and we'll be back with another episode with another YouTuber that we'll talk about. आप चाहते हैं, आपकी कोई recommendation है जिसको आप चाहते हैं हम cover करें, हमें बताइए. Until let then, us know in the comments. Yeah.